Oma Gyantimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshunamiritam Jena Tasmaya Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Madovishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadanti Sva Dadanti Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasari Bhava Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare I'd like to begin by thanking the organizers for inviting me here this evening. तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ शुरू करने से पहले जिन्होंने भी यहाँ पे सब आमंत्रण किया जहाँ भी योजना बनाई उन सब व्यवस्थापकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ. It's very nice to be with all of you ecstatic devotees. आप जितने भावमय भक्तों को दर्शन करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. There's so many devotees in Gujarat, I can't count them all. यहाँ पे गुजरात पे इतने सारे भक्त हैं मैं सबको गिन सकता हूँ. I'm sure this is pleasing Srila Prabhupada very much. मुझे आशा है कि श्री प्रभुपाद को बड़ा ये प्रिय लगता है. And everywhere I go, there's Radha Krishna deities. और राधा कृष्ण के इतने सुंदर विग्रह हैं यहाँ पे. This is showing that Mahaprabhu's proclamation that his holy names would go to every town and village of the world is coming true. तो जैसे महाप्रभु ने ये घोषणा की थी कि भगवान का पवित्र नाम सब गांव में सब जगह फैलेगा तो वो बात सच हो रही है. So this evening, आप सबसे निवेदन है महाराज के अंग्रेजी को अनुवाद करने में थोड़ा मुश्किल है. आप कृपा करके बिल्कुल शांत रहें और मोबाइल सब स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पे रखें. हाँ. That I understand. So this evening I'd like to speak by the mercy of my spiritual master, Srila Prabhupada, from Bhagavad Gita. तो ये शाम को मैं श्री प्रभुपाद जी ने जो भगवद गीता पे टीका लिखी है उस पे मैं कुछ बोलना चाहूँगा. 8th chapter, verse 15. 8वां अध्याय श्लोक संख्या 15. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Mamopetya Pugadar Janma Dukalaya Mashashvatam Napdubhanti Mahatmanaha Shamshidam Paramam Gata. After attaining me, the great souls who are yogis in devotion never return to this temporary world which is full of miseries because they have attained the highest perfection. मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है. Purport by Srila Prabhupada. श्री प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य. Since this temporary material world is full of the miseries of birth, old age, disease and death, naturally he who achieves the highest perfection and attains the supreme planet, Krishna Loka, Goloka Vrindavan, does not wish to return. क्योंकि ये नश्वर जगत जन्म जरा तथा मृत्यु के क्लेशों से पूर्ण है, अतः जो परम सिद्धि प्राप्त करता है और परम लोक कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है वो वहां से कभी भी वापस नहीं आना चाहता. The supreme planet is described in Vedic literature as Avyakta and Akshara and Param Gati. In other words, that planet that is beyond our material vision and it is inexplicable, but it is the highest goal, the destination for Mahatmas, great souls. इस परम लोक को वेदों में अव्यक्त अक्षर तथा परमागति कहा गया है. दूसरे शब्दों में ये लोक हमारी भौतिक दृष्टि से परे हैं और अवर्णनीय हैं, किंतु ये चरम लक्ष्य है जो महात्माओं का गंतव्य है. The Mahatmas receive transcendental messages from the realized devotees and thus gradually develop devotional service
in Krishna consciousness and become so absorbed in transcendental service that they no longer desire elevation to any of the material planets, nor do they even want to be transferred to any spiritual planet. महात्मा अनुभव सिद्ध भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं और इस प्रकार वे धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में भक्ति विकसित करते हैं और दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं कि वे न तो किसी भौतिक लोक में जाना चाहते हैं, यहाँ तक कि न ही वे किसी आध्यात्मिक लोक में जाना चाहते हैं. They only want Krishna and Krishna's association and nothing else. वे केवल कृष्ण तथा कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं, अन्य कुछ नहीं. That is the highest perfection of life. This verse specifically mentions the personalist devotees of the Supreme Lord Krishna. यही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है. इस श्लोक में भगवान कृष्ण के सगुणवादी भक्तों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है. These devotees in Krishna consciousness achieve the highest perfection of life. In other words, they are the supreme souls. ये भक्त कृष्ण भावनामृत में जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करते हैं. दूसरे शब्दों में वे सर्वोच्च आत्माएं हैं. So in this famous verse of Bhagavad Gita, Krishna gives his opinion about the nature of this world in which we live. तो ये जो गीता जी का अति प्रसिद्ध श्लोक है, इसमें भगवान कृष्ण इस भौतिक जगत के स्वभाव के बारे में अपना मत प्रस्तुत कर रहे हैं. He says, Dukalayam Ashashvatam. It's a temporary place full of so much suffering. कृष्ण कह रहे हैं दुखालय अशाश्वतम, ये एक अस्थाई जगह है और हमेशा कष्ट देने वाली है. So we should take his word for what it is. He's the supreme person. His words are perfect and complete. तो हमें भगवान के जो शब्द हैं उनको गंभीरता से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उनके भगवान के शब्द सिद्ध हैं और पूर्ण हैं. And logically, who knows the world better than God? और ये बात भी सही है कि भगवान कृष्ण को छोड़ के इस जगत को और अच्छी तरह से कौन जानता है. He created it, he's maintaining it, and under his will it will be unmanifest in a period of time. तो भगवान कृष्ण ने इस जगत को बनाया है, वो ही पालन कर रहे हैं और ये जगत के विनाश के बाद भी भगवान कृष्ण हमेशा रहेंगे. Doesn't the architect of a building know that building that he designed better than anyone else? तो जैसे कि जिस बिल्डिंग को कोई आर्किटेक्ट बनाता है, वो उस बिल्डिंग की सब बातों को अच्छी तरह जानता है, उसके अलावा और अच्छी तरह कौन जानता है. Doesn't the owner of a patent know the product better than anyone else? उसी तरह से कोई वस्तु को उत्पादन करने वाला फैक्ट्री का मालिक उस वस्तु को सबसे अच्छी तरह जानता है, ना कि कोई दूसरा व्यक्ति. We all know Steve Jobs. He's left this world, but everyone knows Steve Jobs. हम सब स्टीव जॉब को जानते होंगे जो इस अब जगत में नहीं रहे हैं. When he spoke about Apple products, everyone listened. और स्टीव जॉब ने अपनी एप्पल की चीजों के बारे में, एप्पल कंप्यूटर, एप्पल मोबाइल के बारे में सबको बताया और सबने ध्यान से सुना. And when Bill Gates speaks about Microsoft products, people listen. और बिल गेट्स ने अपने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के उत्पादनों के बारे में लोगों को बताया और लोगों ने सुना. So when the creator of this cosmic manifestation speaks about this world we live in, we should listen to him. तो उसी तरह से इस जगत के निर्माता जो भगवान ने इस जगत को बनाया है, जब वो जगत के बारे में कुछ बोलते हैं तो हमें भी सुनना चाहिए. Dukalayam Ashashvatam. It's temporary and full of so many problems. दुखालयम अशाश्वतम, ये अस्थाई है और कितने सारे कष्ट हैं यहाँ पे. Of course, this is not the first time that you've heard this. ऐसा नहीं कि ये हम पहली बार सुन रहे हैं. All the speakers in Gita and Bhagavatam, they repeat over and over and over and over and over again. तो जितने भी वचन है, जितने भी प्रवचन देने वाले गीता और भागवत में यही वचनों को बार-बार दोहराते हैं, दोहराते हैं, दोहराते हैं. But the sages say that repetition of a point is necessary to fully understand it. लेकिन कोई चीज का दोहराना बहुत जरूरी है जिससे कि उस विषय वस्तु को हम अच्छी तरह समझ लें. There's a difference between Gyan and Vigyan. ज्ञान और विज्ञान दोनों में अंतर है. Gyan means knowledge, ज्ञान का अर्थ है ज्ञान and
Vigyan means realized knowledge. और विज्ञान का मतलब सच्चा ज्ञान जो साक्षात्कार होता है. Like a new bhakta will say, Aham Brahmasmi, I am spirit soul, I'm not the body. जैसे जो व्यक्ति योगी ज्ञानी होता है वो बोलता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ. But a realized advanced devotee, he'll say, Aham Brahmasmi, I am not this body, I am spirit soul, part and parcel of Krishna. लेकिन जिस व्यक्ति ने इस चीज का साक्षात्कार कर लिया है वो पूरी तरह से बोलेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं कृष्ण का अंश हूँ. So how do we get from Gyan to Vigyan? तो कैसे हम ज्ञान से विज्ञान की तरफ पहुँचे? Tadvidi paripatena paripashna sevya upadekshanti teganam jnanashtatvadarshanaha. Try to learn these truths by approaching a spiritual master. तो सत्य जानने का प्रयास करो एक आत्म साक्षात्कार गुरु के पास जाके. Inquire from him submissively उनसे जिज्ञासा करो विनम्रता पूर्वक and render service to him. और उन्हें सेवाएं प्रदान करो. The self-realized souls can give you knowledge because Tattvadarshi, they've seen the truth. एक आत्म साक्षात्कार में व्यक्ति आपको ज्ञान दे सकता है क्योंकि उसने तत्व के दर्शन किए हैं. So the important word is sevaya. इसलिए सेवाया. Paripashna, you ask questions to the spiritual master, you get his instructions, and you serve those instructions. And by serving those instructions, the Gyan becomes Vigyan. तो जब हम गुरु की सेवा करेंगे और उनसे जिज्ञासा करेंगे, उनसे कुछ निर्देशन को प्राप्त करेंगे और उनकी बातों की आज्ञा का पालन करेंगे, तो हम ज्ञान से विज्ञान की तरफ प्राप्त करेंगे. You hear the spiritual knowledge? Okay, sounds good. अगर हम खाली आध्यात्मिक ज्ञान सुनेंगे तो हमें अच्छा लगेगा. But by serving the order of the spiritual master, that knowledge becomes like a light on. Boom! Oh, now I can understand. लेकिन जब हम गुरु की सेवा करेंगे तो आध्यात्मिक ज्ञान हमारे मन में प्रकाशित करेगा और हम तब समझ जाएंगे. In days of yore, in previous stages in this country, it was much easier. वैदिक काल में, प्राचीन काल में ये सब चीजें बड़ी सरलता से समझी जाती थी. The student would live in the ashram of the guru. एक शिष्य अपने गुरु के आश्रम में रहता था. From 5 to 25 years of age. और 5 से 30-35 साल की उम्र तक. And the spiritual master would only have to repeat something 3 times, and their students would not only understand it, but by serving the guru in the ashram, they would realize it. तो गुरु कोई भी बात गुरुकुल में आश्रम में अपने शिष्य को 3 बार बोलता था और वो 3 बार बोलने से ना ही वो समझ लेते थे, लेकिन उनको आत्म साक्षात्कार भी हो जाता था गुरु की सेवा करने से. But this is not Satya Yuga. लेकिन ये वर्तमान में सतयुग नहीं है. This is not Treta Yuga. ना ही ये त्रेता युग है. This is not Dwapara Yuga. ना ही ये द्वापर युग है. I'm sorry, Prabhus. This is Kali Yuga. मुझे दुख है प्रभुगण, लेकिन ये तो कलयुग है. Tatastanu dhinam dharma satyam socham samadaya kalena balina rajan nanshat yayur balim shmiti. Then, O king, religion, truthfulness, cleanliness, mercy, austerity, duration of life, physical strength and memory will diminish day by day because of the powerful influence of the age of Kali. हे राजन, इस कलयुग में धर्म, सत्य, शौच, क्षमा, दया, तपस्या, जीवन की उम्र, बल, स्मृति दिन पर दिन क्षय होता जाएगा कलयुग के बड़े भयानक प्रभाव से. This is bad news. ये एक बुरे समाचार हैं. If you read the newspaper or you go on the internet, there's so much bad news. इस कलयुग में कितनी सारी खराब खबरें हैं. But this is the worst news. लेकिन ये तो सबसे खराब समाचार है. That we live in the age of Kali and all good things diminish, 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 day by day. ये कितने खराब समाचार हैं कि हम ऐसे युग में जी रहे हैं जितने भी हमारे अच्छे गुण हैं दिन पर दिन कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे. Prabhupada told my godbrother Vishnu Jan Maharaj that in the advanced stages of Kali Yuga, there'll hardly be anything to eat. प्रभुपाद जी ने हमारे गुरु भाई विष्णुचंद महाराज को कहा
कि कलयुग के आगे आने वाले दिनों में कोई मुश्किल से कोई चीजें बचेगी खाने लायक. Because the impious, sinful people will have killed off all the bulls and the cows. क्योंकि जो पापी व्यक्ति होंगे वो सब बकरियां गाय वो सबको मार देंगे. Because there's no bulls, there'll be no way to plow the fields and get grains and fruits and vegetables. ना ही कोई जमीन मिलेगी खेती करने के लिए, अन्न उत्पन्न करने के लिए. They'll have exploited the earth to the point where there's no oil left inside Mother Bhumi. और भूमि माता का इतना ज्यादा शोषण होगा कि भूमि में तेल ही नहीं बचेगा. So their tractors won't work. इसलिए ट्रैक्टर काम नहीं करेंगे. And there's no cows and bulls to plow the fields, so there'll be no food. और ना ही गाय और बैल होंगे जिससे कि खेत जोते जा सके. So Vishnujan Maharaj said, Srila Prabhupada, what will people eat? तो विष्णुजन महाराज ने शील प्रभुपाद से पूछा कि शील प्रभुपाद ऐसे समय लोग क्या खाएंगे? Prabhupada's eyes got very big. He said, they will eat each other. प्रभुपाद की आंखें बिल्कुल बड़ी हो गई और उन्होंने कहा कि कलयुग में ऐसे समय में लोग एक दूसरे को खाएंगे. It's hard to believe. ये हो सकता है अभी हमें मानना थोड़ा मुश्किल होगा. But things could get that bad. लेकिन सचमुच चीजें इतनी खराब हो जाएगी आगे. But 200 or 300 years ago, if people knew how bad the earth is now, they wouldn't believe it. लेकिन 100 साल पहले की बातें 100 साल पहले लोग आज की बातों को नहीं मानते होंगे. Because of our artificial life standard and because of greed, there's this problem with the climate. It's getting hotter and hotter and hotter, and they wouldn't think 300 years ago this was possible. हमारे कृत्रिम जीवन की योजनाओं को और हमारे लोभ के कारण दिन पर दिन मौसम खराब होता जा रहा है. One of my godbrothers said to Srila Prabhupada, I just want to distribute your books in this lifetime. In fact, I want to distribute your books life after life after life, Srila Prabhupada. तो हमारे गुरु भाई ने श्री प्रभुपाद को कहा कि हे श्री प्रभुपाद, मैं आपकी ग्रंथों का जन्म जन्मांतर एक जन्म दूसरे जन्म बार आपकी ग्रंथों का वितरण करना चाहता हूँ. That's a nice sentiment, isn't it? और एक बहुत अच्छी ये भावना है. Prabhupada wanted his books distributed. प्रभुपाद चाहते भी थे कि उनके ग्रंथों का वितरण हो. So the disciples said, Janme, Prabhu She, you're my guru, life after life. I want to distribute books life after life after life. वो शिष्य ने कहा प्रभुपाद जी को कि आप मेरे जन्म आप मेरे गुरु हो, इसलिए मैं आपके हर एक जन्म में बार आपकी ग्रंथों का वितरण करूंगा. Prabhupada said, no. प्रभुपाद जी बोले नहीं ऐसा नहीं है. He said, I want my disciples to go back home, back to Godhead. मैं चाहता हूँ कि मेरे शिष्य इसी जीवन में भगवान के धाम चले जाएं. He said, Kali Yuga is going to get worse and worse. Kali Yuga is going to get worse and worse. उन्होंने प्रभुपाद जी कलयुग में हर चीज और ज्यादा खराब से खराब होती जाएगी. He said, you try to go back to Godhead in this lifetime. इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए इसी जीवन में भगवान के धाम चले जाएं. Prabhupada wanted his books distributed, but he also wanted each of us to become pure devotees. प्रभुपाद चाहते थे कि उनकी पुस्तकों का वितरण हो, लेकिन प्रभुपाद जी साथ में ये भी चाहते थे कि उनके शिष्य शुद्ध भक्त बने. We stress the importance of Prabhupada's instruction to distribute books, but don't forget, he wanted us to read the books and practice the books and go back to Goloka Vrindavan. तो हमें प्रभुपाद जी के आदेश को मानना है कि हमें प्रभुपाद जी की पुस्तकों का वितरण करना है, लेकिन साथ में उन पुस्तकों में जो लिखा है उसके हिसाब से अपना जीवन जीना है और इसी जीवन में भगवान के धाम जाना है. Just like one of my heroes in Krishna consciousness is Narottam Das Thakur. Narottam Das Thakur. कृष्ण महान आंदोलन में बहुत महान आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर हुए. You know the story. He appeared just after Lord Chaitanya departed this world. चैतन्य महाप्रभु के तिरोहित होने के बाद नरोत्तम दास ठाकुर इस दुनिया में प्रकट हुए. Narottam, Srinivasacharya, Shamananda Pandit, they carried on the Sankirtan movement after Panchatattva left. पंच तत्वों के जाने के बाद तीन आचार्यों ने इस आंदोलन में बहुत अच्छी तरह प्रचार किया. नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद पंडित. And their lives are amazing. What stalwart preachers they were. और उनके जीवन में उन्होंने अद्भुत प्रचार किया. उनके जीवन का चरित्र सुनने लायक है. But if you read the poems of Narottam Das Thakur, you'll see that he was very deep devotee. He was Rasik Bhakta, a lover of Radha Shyam.
तो नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में जब हम जानेंगे तो हमें पता चलेगा वो इतने गहरे रसिक भक्त थे राधे श्याम भगवान राधा कृष्ण के। So we want to become like Narottam. He's our hero. तो नरोत्तम दास ठाकुर हमारे हीरो हैं, उनको हमें उनकी तरह बनने का प्रयास करना चाहिए। But it begins by understanding Dukkalayam Shashvatam. लेकिन ये तब शुरू होगा जब हम समझें कि ये भौतिक जगत अस्थायी है और दुखालय है। One time Prabhupada said, "This material world is no place for a lady or a gentleman." एक बार प्रभुपाद जी बोले कि ये भौतिक जगत कोई भी सज्जन व्यक्ति के रहने लायक जगह नहीं है। You're never going to become Krishna conscious if you're attached, if you're mystified. Oh, this world has so much to offer me. Nope. हम कभी भी कृष्ण भावना भावित नहीं बन पाएंगे अगर इस भौतिक जगत में हम आसक्त रहते हैं और अगर हमारे मन में ये आशा रहती है कि इस भौतिक जगत से हमें बहुत सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं। We're very fortunate to have this advice of Lord Krishna in the Bhagavad Gita, that this world is temporary and full of suffering. We're blessed to hear that. हम बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं, हमें बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है जिससे कि हमें भगवान की ये बात सुनने को मिली है कि भौतिक जगत दुखमय है और अस्थायी है। Because sometimes when you look at this world, it looks nice. क्योंकि कभी-कभी जब हम इस भौतिक जगत को देखते हैं तो भौतिक जगत हमें बहुत सुंदर दिखाई देता है। Huh? It looks nice. For example, when you look at a beautiful forest, उदाहरण के लिए जब हम इस भौतिक जगत में घूमते हैं तो हम सुंदर-सुंदर जंगल देखते हैं। you go to the foothills of the Himalayan mountains, so many beautiful lakes, many trees and flowers. It looks so nice, this world. What is Krishna talking about? तो जब हम हिमालय की तलहटियों में जाते हैं तो हम देखते हैं सुंदर-सुंदर पेड़ हैं, बगीचे हैं, सुंदर-सुंदर वृक्ष हैं, तो हमें लगता है कितना सुंदर है जगत, कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि दुखमय है। But a saintly person, he sees with his ears, not his eyes. लेकिन जो साधु होता है वो इस दुनिया के दर्शन आंख से नहीं करता है बल्कि कान से करता है। What's actually happening in that beautiful forest? लेकिन उस सुंदर जंगल में सचमुच क्या हो रहा है? Actually, what's happening in that beautiful forest? देखते हैं हम लोग कि उस जंगल में क्या हो रहा है। There's a bitter struggle going on, for there every living entity is food for another living entity. उस जंगल में जिसे हम सुंदर समझते हैं उसमें हमेशा एक संघर्ष चल रहा है, एक जीवात्मा दूसरे जीवात्मा का भोजन बन रहा है। Hastani sahastanam apadhani chatushpadam falguni tatra mahatam jivo jivasa jivanam. Those who are devoid of hands are prayed for those who have hands. Those devoid of legs are prayed for the four-legged. The weak are the subsistence of the strong. And the general rule holds that one living being is food for another. तो जो व्यक्ति के हाथ नहीं हैं, वो उस जीवात्मा का शिकार है जिसके हाथ हैं। जिस जीवात्मा के पैर नहीं हैं, वो उस जीवात्मा का शिकार है जो चार पैर वाला है। जो कमजोर है, वो ताकतवर का भोजन है। और सामान्य नियम ये है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का भोजन है। That's what's happening in the forest. और वही चीजें हो रही है जंगलों में जिसे हम अच्छा समझते हैं। Animals mostly, they're looking for food. ज्यादातर जंगल में पशु होते हैं जो भोजन की शोध में रहते हैं। It's called anamoya. Anamoya means their prime objective in life is to fill their stomachs. उनका जो जीवन का मुख्य उद्देश्य है वो कि कहाँ से उन्हें भोजन ग्रहण करना है। Even the pretty trees are engaged in a bitter struggle for water and light. There's a lot of competition with other trees, so they're struggling for water and to get the light of the sunshine. There's a bitter struggle between the beautiful trees. और जो सुंदर वृक्ष हम देखते हैं जंगलों में, वो सुंदर वृक्षों के बीच में भी संघर्ष चल रहा है। वो भी चाहते हैं कि हमें सूर्य का प्रकाश मिले, पानी मिले टाइम पे। वो लोग भी एक दूसरे से संघर्ष कर रहे हैं। Where's the enjoyment? It's a struggle for existence. कहाँ पे सुख है? ये तो खाली अस्तित्व का संघर्ष चल रहा है। And in this forest of illusion, we're engaged in the same business. और इस मोह रूपी जंगल में हम भी उसी कार्य में लगे हुए हैं। Prabhupada wrote in his Vyasa Puja offering to his Guru Maharaj, struggle for existence, the human race. The only hope is divine grace. तो प्रभुपाद जी ने अपने गुरु भक्तिदास सरस्वती ठाकुर को व्यास पूजा में उनका गुणानुवारण किया कि इस भौतिक जगत में खाली संघर्ष ही चल रहा है। हे गुरु महाराज, आप ही मेरा एकमात्र आश्रय हैं। Shukadeva Goswami in the Bhagavatam describes material enjoyment as Gandharva Pura,
a house in the sky. सुखदेव गोस्वामी भागवतम में इस भौतिक जगत को या भौतिक विषय भोग को गंधर्वपुर बताते हैं। गंधर्वपुर का मतलब आकाश में घर। There's no house in the sky. क्या आकाश में कभी घर हो सकता है? Elsewhere he describes it as the egg of a horse. एक और जगह वो बताते हैं कि घोड़े के अंडा हुआ है। Wait a minute. Horses don't give eggs. Chickens give eggs. एक मिनट रुकिए, क्या घोड़ा कभी अंडा देता है? मुर्गे अंडे देते हैं। So what's he trying to say, Shukadev Goswami? Yes, you're thinking there's enjoyment here, but there's no enjoyment. तो शुकदेव गोस्वामी क्या कहना चाहते हैं? वो ये कहना चाहते हैं कि क्या आपको लग रहा है यहाँ पे कोई सुख भोग है? यहाँ पे कोई विशेष सुख भोग नहीं है। Kaviraj Goswami says the conception of good and bad in this world is wrong. It's all bad. कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जो हम इस भौतिक जगत में अच्छा और बुरा समझते हैं, ये सब खाली मन का मोह है, सब कुछ ही बुरा है यहाँ पे। Nevertheless, Maya Devi, she is very expert in making the whole thing appear very nice. लेकिन फिर भी माया देवी इतनी होशियार है, वो इस प्रकार से इस भौतिक जगत को प्रस्तुत करती है कि हमें बहुत ही आकर्षक लगता है भौतिक जगत। Even great demigods are confused by her ingenious schemes. बड़े-बड़े देवता भी माया देवी के धोखे देने वाली योजनाओं से उल्लू बन जाते हैं। Isn't that the first verse of the Srimad Bhagavatam? श्रीमद् भागवतम के पहले अध्याय के पहले श्लोक में श्लोक है ये। Muyanti yad suraya tejavari mridam yata vinimayo yata turi sargo. By him, Krishna, even the great sages and demigods are placed into illusion as one is bewildered by the illusory representations of water seen in fire, or land seen on water. भगवान के द्वारा बड़े-बड़े ऋषिगण और बड़े-बड़े देवता भी विमोहित हो जाते हैं, जैसे कभी-कभी हम लोग अग्नि में जल को देखते हैं और कभी-कभी हम जल पे भूमि को देखते हैं। So great personalities like Brahma can be illusioned by this world. What about little old you and me? तो बड़े-बड़े देवता ब्रह्मा जैसे भी विमोहित हो जाते हैं, तो हम जैसे चुटक-पुटक लोगों की तो क्या गिनती है। To show the power of illusion, Srila Prabhupada once told the story of the great Duryodhana, how Duryodhana, the great teacher, was illusioned. तो माया की विमोहित शक्ति कितनी जबरदस्त है, उसके बारे में प्रभुपाद जी ने एक बार दुर्योधन की कहानी सुनाई। One time Duryodhana, he wanted to visit the imperial palace of the Pandavas, which had been constructed by Maya Dhanava. तो एक बार दुर्योधन इंद्रप्रस्थ में पांडवों के महल के दर्शन करने जाते हैं। ये पांडवों के महल को मय दानव ने बनाया था। Now Duryodhana may have been who he was, but he was very intelligent. दुर्योधन बहुत समझदार थे। If you read Mahabharata, you know Duryodhana was very intelligent. दुर्योधन बहुत समझदार थे। So when he entered into this palace of the Pandavas, he saw what, as he was walking into the palace, a body of water. So as he was walking towards that body of water, he walked into it and he lifted up his royal robes so as not to get wet. तो जैसे दुर्योधन महल में प्रवेश करते हैं, तो सामने उनको ऐसा लगता है कि पानी है, तो पानी के चक्कर में वो अपने शाही परिधानों को ऊपर कर देते हैं। But actually, by the arrangement of Mayadhavana, it wasn't water, it was an amazing crystal floor. It appeared like water, but it was just a crystal floor. So what he did is he walked in and pulled up his coat, and all the ladies in the palace saw his underwear. They were laughing. तो वो पानी नहीं था, वो बिल्कुल साफ वो था, फर्श था, कांच का फर्श था, लेकिन पानी जैसा लग रहा था। तो दुर्योधन ने कपड़े ऊपर किए, तो पानी तो था नहीं, तो उनके कपड़े हो गए ऊपर और स्त्रियों ने उनको अंडरवेयर में देखा। Then he kept walking and he came to a real pool of water, but he thought, oh, this is crystal again. फिर वो आगे जब चले तो सब कुछ पानी की एक सरोवर था, लेकिन उनको लगा कि ये तो कांच का फर्श है। So he thought he could walk across the crystal. और उन्हें लगा ये तो आराम से वो चल सकते हैं इस फर्श पे। So he didn't pull up his robes. और उन्होंने अपने कपड़े ऊपर नहीं किए। He just walked and boom, fell into the water. और वो चले और सीधा
पानी के सरोवर में गिर गए। You see, illusion is very powerful. Maya Dhanava. So next he came to a crystal door. He thought it was open because it was crystal. He could see through it. He thought there's no door there and bumped his head into it. तो आगे वो जाके एक कांच के दरवाजे पे आए, तो लग ही नहीं रहा था कि दरवाजा है, तो उनको लगा यहाँ पे कुछ नहीं है, वो सीधा तेजी से चले और उनका सिर सीधा दरवाजे से टकरा गया। Then he approached what appeared to be another crystal door, and instead of bumping into it, he tried to open it, but there was no door, and he fell on his face. आगे वो जब गए तो उन्हें लगा कि एक दरवाजा है, लेकिन दरवाजा नहीं था, तो दरवाजे को जब खोलने के लिए आगे बढ़े तो सीधे आगे गिर जाते हैं। So he's a great personality in one sense, and because of this, all the ladies in the palace, they were laughing. He was so embarrassed. तो दुर्योधन को इस तरह से, दुर्योधन एक बहुत महान व्यक्ति थे, लेकिन वो भी इस प्रकार धोखा जब खाए तो सभी महल की स्त्रियां हंसने लगी जैसे कि महाराज हंसने लगे। But in laughing at this story, we're laughing at ourselves. लेकिन हमें ये कहानी में हम दुर्योधन पे हंस रहे हैं, लेकिन हमें सब कुछ अपने आप पे हंसना चाहिए। Because we're still somewhat influenced by the tricks of Maya. क्योंकि हम माया के खेलों से कितना ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। Maya's greatest trick is to cause us to think, aham mameti, I am the body. तो माया की जो सबसे बड़ी खेल है, जो माया का सबसे बड़ा जादू है, वो हमें ये सोचने पे मजबूर करती है कि हम ये शरीर हैं। It's not easy to overcome this illusion that I am the body. ये जो अहंकार है, मिथ्या अहंकार कि मैं ये शरीर हूँ, इसको जल्दी से पार करना आसान नहीं है। Oh no, I've been a devotee for 25 years. I've given many lectures. Someone may say that I'm not the body. I know I'm not the body. कोई कह सकता कि मैं 25 साल से बातें सुन रहा हूँ कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं बार-बार ये सुन चुका हूँ और मुझे पता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। But let me say that if the idea of sense gratification comes into your mind and you contemplate it even for one moment, you're still in the bodily concept of life, Prabhu. लेकिन हे प्रभु ध्यान रखिए, आप लोग अगर ऐसा बोल रहे हैं कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, और इतने सालों से इसी बात को बार बार दोहरा रहे हैं, लेकिन अगर एक क्षण के लिए भी आपके मन में इंद्रिय तृप्ति की इच्छा आती है, तो मेरे प्रभुओं मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने इस चीज का साक्षात्कार नहीं किया है कि आप ये शरीर नहीं हैं। Prabhupada says sometimes in a lake, if you look at the lake, little bubbles come up from the dirt at the bottom of the lake. Little bubbles you see. तो प्रभुपाद कहते हैं कि कभी-कभी हम तालाब में देखते हैं बुदबुदे ऊपर आते हैं। So sometimes because of our many births in this material world, these little ideas of sense gratification may appear in your mind. Where did they come from? I've been chanting Hare Krishna for so many years. What's going on? तो कभी-कभी जैसे तालाब पे कभी-कभी ये बबल्स आ जाते हैं, बुदबुदे आ जाते हैं, उसी प्रकार से हम इतने जन्म जन्मांतर यहाँ पे हैं इस भौतिक जगत में, तो कभी-कभार हम इतने सालों से महामंत्र का जप भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी-कभार हमारे मन में इंद्रिय तृप्ति की भावनाएं आ जाती है, तो हम सोचते हैं कि भावनाएं कहाँ से आई, कैसे आई ये भावनाएं? It will happen naturally. लेकिन ये स्वाभाविक रूप से आती है। We're still in this world. हम अभी भी इस भौतिक जगत में We're not out of danger. हम खतरे से बाहर नहीं निकले हैं। So sometimes material thoughts may come to your mind. इसलिए कभी-कभी हमारे मन में बात आ सकती है। And if you understand you're not the body, you'll say, no, go away. और हम जब ये समझना चाहते हैं हम ये शरीर नहीं, तो हम बोलते हैं चले जाओ यहाँ से। And if you're not so advanced, you may daydream, oh, no, I shouldn't think like that. But you did. So you're still in the bodily concept of और life. अगर हम इतने उन्नत भक्त नहीं है, तो हमें ये स्वप्न जैसा लगेगा और हम बार-बार से इसी बात को महसूस करेंगे कि हम ये शरीर ही हैं। These material desires are unwanted guests. ये जो विषय कामनाएं हैं, ये अनचाहे मेहमान हैं जिनको हम नहीं चाहते। Just like if someone comes into your home to spend the weekend, some relative, and you're just really upset that this distant relative is there, you have some problems with him or her. How do you get rid of them? कभी-कभी हम देखते हैं हमारे कोई घर में अनचाहे मेहमान आ जाते हैं, हम अपने काम में लगे हैं, तो हम ये सोचते हैं कि इस मेहमान से कैसे छुटकारा पाया जाए। It might be too impolite to say, go away. You don't want to do that. हम ऐसा साफ-साफ नहीं बोल सकते कि आप बाहर चले जाओ। So I'll tell you how to get rid of unwanted guests. इसलिए हमें इस प्रकार से ऐसे अनचाहे मेहमानों से छुटकारा पाना होता है। Don't feed them. इसलिए उनको पोषण ना करें। Right?
Your mother-in-law is staying with you and you say in the morning, in this house, we don't have breakfast. तो हमारी सास हमें बोलेगी, उनको बोलेगी कि भाई हमारे घर में नाश्ता नहीं है. She says, okay, I'll fast till lunch. तो मेहमान बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं, मैं भोजन तक व्रत रखूंगा, भोजन पे कर लूंगा. In this house, we don't have lunch. तो वो बोलेगी सास की हमारे घर में भोजन की भी व्यवस्था Oh नहीं है. dear, I'll have some snacks. तो वो मेहमान बोलेंगे अरे कुछ नाश्ता कुछ तो दे दो. No snacks allowed in this house. इस घर में कोई नाश्ते की भी व्यवस्था नहीं है. All right then, I'll wait to dinner. कोई बात नहीं, मैं रात के भोजन तक इंतजार करूंगा. Maya, no dinner in this house. लेकिन भोजन रात्रि का भोजन भी नहीं मिलेगा. She'll go, well, I'm leaving then. तो मेहमान समझेंगे तो फिर मैं यहाँ रह क्यों रहा हूँ. Oh, I'm so sorry to hear that. तो कितना दुख होगा उनको सुन के. In a cynical way, I'm saying. She says, I'm leaving. Oh, that's too bad. तो वो बोलेंगे मेहमान हम जा रहे हैं, तो घर वाले बोलेंगे अच्छा ये तो बहुत खराब हो रहा है. So no offense to mother-in-laws. I'm sure there's many wonderful mother-in-laws out there. I'm just using them as an example. तो मैं कोई ऐसा सासू अपने मन पे खराब मत लेना. मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता, मैं तो एक उदाहरण में मैंने बताया है. If you don't want unwanted guests in your house, don't feed them. So if you don't want these unwanted guests, these material desires in your mind, don't feed them. Don't think about them. Just ignore them and they'll go away. तो ये क्या तरीका, ये उदाहरण महाराज क्यों दे रहे कि जैसे अनचाहे मेहमान हमारे घर में आते हैं, अगर हम उनको भोजन नहीं खिलाएंगे तो चले जाएंगे. उसी प्रकार से जब ये विषय कामना की इच्छाएं हमारे मन में आती है तो हम उन पे मनन नहीं करें, उनको इग्नोर कर दे तो वो भी चले जाएंगे. As long as we're in these worlds, these thoughts may come, but we're not going to entertain them. That's devotee. Vachavegam, manakasavegam, vachavegam, manasakrodavegam, jivavegam, upashtavegam. Nyet, no, go away. तो जब तक हम इस भौतिक जगत में इस प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के विचार हमारे मन में बार बार आएंगे, लेकिन हमें उन पे ध्यान नहीं देना है, उन्हें इग्नोर करना है. जैसा कि उपदेशामृत में रूप गोस्वामी बोलते हैं, वाचो वेगम मनसक्रोधवेगम. If sense gratification comes to the mind, we should think like Bhimamangal Thakur. तो जब हमारे मन में इंद्रिय तृप्ति की इच्छा आए तो हमें भी बिल्कुल मंगल ठाकुर की तरह सोचना चाहिए. Yadavari mama cheta Krishna para dara vinda nava nava rasa dhanam ujjate rantum asit. Since my mind has been engaged in the transcendental loving service of Krishna, realizing ever new pleasure in him every moment, whenever I think of mundane pleasure, I spit at the thought and my lips curl in distaste. तो बिल्कुल मंगल ठाकुर बोलते हैं जब से मेरा मन भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में लगा है तो मुझे दिव्य आनंद रोज महसूस होता है. और जब भी मैं ऐसे समय भौतिक विषय इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचता हूँ तो मेरा मन थूकने को मन करता है और मेरे होठ सूख जाते हैं. So this is the trick of Maya, to make us think, aham mameti, I am the body, eat, drink and be merry, for tomorrow we die. तो जब तक ये माया के अलग अलग खेल हैं वो हमें सोचने में मजबूर करती है कि हम ये शरीर हैं और हमें खाना पीना भोग करना है, कल किसने देखा है, कल तो मरने वाले हैं. But you may be one of those rare souls, a Vaishnava, devotee of the Lord, who can overcome that illusion and realize, aham paramasmi. And what's more, that you're part and parcel of Krishna. लेकिन हो सकता है इतनी सारी जीवात्माओं में हम वो बिल्कुल दुर्लभ जीवात्मा होंगे जो इस चीज को समझ सके कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं और हम भगवान कृष्ण के अंश हैं. Because Maya has another trick. माया का एक और खेल है, एक और जादू. She has lots of tricks up her sleeve. माया के बहुत सारे जादू अपनी बाहों में रहते हैं छुपे हुए. But the two big tricks that she offers the conditioned soul is to think, I am the body. The second trick is if you think, I am God. तो उनके दो जो सबसे बड़े जादू हैं, वो पहला जादू ये है कि जीवात्मा ये सोचने में मजबूर होता है कि मैं तो शरीर हूँ, और दूसरा जादू है कि जीवात्मा सोचने में मजबूर होता है कि मैं तो भगवान हूँ. Both are big illusions. और दोनों ही बहुत बड़ी भ्रम हैं. I am the body, that's a big illusion. मैं ये शरीर हूँ, ये बड़ा भ्रम है. But you know, in your country, here in Bharat, India, in Bharat, there are so many persons who are thinking, I am God.
आपको पता है इस भारत देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि हम भगवान हैं. Very popular, Shankaracharya, with all due respect. He promoted this illusion that I am God. तो शंकराचार्य जिनको हम पूरा आदर देते हैं, उन्होंने ये भ्रम पैदा किया लोगों में, और लोग ऐसा मानते हैं, और कुछ लोग कि हम भगवान हैं. Mr. Mayavadi, I'm not a great philosopher, but I have one question for you. हे मेरे प्रिय मायावादी, मैं तो बहुत बड़ा सिद्धांतिक नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक प्रश्न है आपके लिए. If you're God, why are you struggling in this world with birth, disease, old age, and death? Is that one of your leelas, Mr. God, to suffer in this world? No. God is the supreme enjoyer. You're not God, you're dog. हे मेरे प्रिय मायावादी, अगर आप अपने को सब कुछ भगवान मानते हो, तो क्यों फिर आप जन्म मृत्यु जरा व्याधि से संघर्ष कर रहे हो? क्यों आप कष्ट पा रहे हो? भगवान तो कृष्ण है, परम सत्य कृष्ण है. अगर आप अपने आप को ऐसा समझ लो तो आप भगवान नहीं, आप तो डॉग हो, आप कुत्ते हो. A dog. Yeah. Woof, woof. I am God. Woof, woof. तो जैसे कुत्ता भौंकता है, जैसा महाराज बोल रहे हैं, उसी तरह से मायावादी भौंकते हैं कि मैं भगवान हूँ. So to overcome these two misconceptions that I am the body and I am God, it's not easy. It takes discipline. It takes determination in spiritual life to overcome these two obstacles to becoming an unalloyed lover of Radha and Krishna. तो दो जो भ्रांत धारणाएं हैं, एक तो मैं शरीर हूँ और एक मैं भगवान हूँ, इनको दूर करना सरल नहीं है. इसके लिए दृढ़ता चाहिए और डिसिप्लिन चाहिए और भगवान श्री राधा कृष्ण की शुद्ध भक्तिमय सेवा चाहिए. It's possible. और ये संभव है. Chaitanya Charitamrita, Madhya 19, verses 147 and 146 and 147 say the following. तो चैतन्य चैतामृत में मध्य लीला में 19वें अध्याय के 146 और 147 श्लोक में लिखा हुआ है. Dharmachari madhye bhuta karma nishta koti karma nishta bhajye ekajhani shreshta. Among the followers of Vedic knowledge, most are following the process of fruitive activity and distinguishing between good and bad work. Out of many such fruitive actors, there may be one who is actually wise. तो जो वैदिक ज्ञान का पालन करने वाले अनुयायी हैं, उनमें ज़्यादा सब कर्म कांड के मार्ग के पीछे जाते हैं और अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसका भेद करते हैं. ऐसे गंभीर कर्म कांड के बीच में कोई एक व्यक्ति होगा जो ज्ञानी होगा. Koti mukta madhye durlabha eka Krishna bhakta koti jani madhye haya eka jana mukta. Out of many such millions of wise men, one may actually become liberated, mukta. And out of many millions of such liberated persons, a pure devotee of Lord Krishna is very difficult to तो find. ऐसे जो दुर्लभ ज्ञानी हैं, ऐसे लाखों ज्ञानियों में बीच में कोई एक सचमुच मुक्त बनेगा, और ऐसे लाखों मुक्तों में से कोई एक भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त बनेगा. That's you. और उनमें से आप हैं. You won't admit it, you're very humble, but you're special souls who are not attracted to the materialistic way of life or the illusion of becoming God. You've turned your back on material existence to the sunshine of Krishna consciousness. तो आप वो लोग हैं जो इतने भाग्यशाली हैं, और आप ही वो लोग हैं, हो सकता है विनम्रता से आप इस बात को नहीं मानते होंगे, लेकिन आप भौतिक जगत से अनासक्त हो रहे हैं और साथ साथ में कृष्ण जैसे सूर्य के सामने आप प्रकट हो रहे हैं. So how to achieve that, perfect that goal of becoming a pure devotee and not interested in any illusion? तो किस प्रकार से उस लक्ष्य को हम प्राप्त करें, कैसे भगवान के शुद्ध भक्त बने हम? Well, one of the ways is to associate with devotees. एक तरीका ये है कि हम भगवान के भक्तों का संग करें. Because Vaishnava devotees have understood the process, the yuga dharma, the means of becoming liberated and becoming Krishna conscious. They have learned that secret. Harinam, Harinam, Harinam eva kevalam, Kalo nasteva, 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 gatiranyata. That in the age of Kali, the most easiest and sublime means of rising above illusion, becoming enlightened, is to chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. तो इस कलयुग में सबसे सरल तरीका जो मोह से ऊपर उठने का है वो है भक्तों के संग में हरि नाम संकीर्तन करना. Chanakya Pandit encourages us in the same way. Chanakya Pandit. चाणक्य पंडित जी ने इसके बारे में एक बात बताई है. Tyaja dhujana samsargam bhajasadu samaganam kuru punyam ahoratram smara nityam anityatam. Give up the association of evil persons. Partake of the association of saintly persons. Perform pious deeds both day and night, and always remember the flickering nature of this material world. तो चाणक्य पंडित ने बहुत ही अच्छे श्लोक में 4 चीजें बताई है हमारे लिए. सबसे पहले वो कहते हैं कि जो दुर्जन व्यक्ति है उसका संग हमें त्याग कर देना चाहिए. दूसरा वो कहते हैं कि साधुओं का संग हमेशा करना चाहिए. तीसरा पुण्य कार्य दिन रात करने चाहिए. और चौथा इस भौतिक जगत के अनित्य स्वभाव को हमेशा नित्य ध्यान रखना चाहिए. It's a simple process. Chant, dance, have some katha feast. Very simple. तो ये बहुत ही सरल प्रक्रिया है. हमें कीर्तन करना है, जप करना है, नृत्य करना है, भक्तों का संग करना है, कुछ कथा करनी है और प्रसाद लेना है. But you have to be patient because it takes time to cheto tarpanam marjanam, purify the nasty things within the heart before the prema arises. लेकिन हमें धीरज रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रक्रिया में समय लगेगा. चेतो दर्पण मार्जनम साफ करने में समय लगेगा. Srila Prabhupada once said to one of my godbrothers, if I revealed all the material attachments that are there in your heart, you'd faint. एक बार श्री प्रभुपाद अपने शिष्य को बोले कि अगर मैं ये बता दूं कि तुम्हारे हृदय में कितनी सारी भौतिक आसक्तियां हैं, जब तुम ये बात सुन लोगे तो तुम उसी टाइम बेहोश हो जाओगे. But this mantra, Hare Krishna, is so powerful. ये मंत्र जो हरे कृष्ण महामंत्र है इतना ज्यादा शक्तिशाली है. It not only purifies the hearts of sinful reactions, it uproots the material desires which are the cause of those sinful reactions. And what's more, when the garden's cleaned, the beautiful bhakti lat beads, the pure seed of bhakti or devotion for Krishna, it can grow very healthily, very quickly. तो ये हरि नाम इतना शक्तिशाली, ये हमारे जितने भी पाप पूर्ण कर्म के फल है उनको नाश करने वाला है. और जो भी विषय कामनाओं के कारण हम पाप करते हैं वो विषयों को भी उन्मूलन करने वाला है. और जब हमारी हृदय बिल्कुल साफ हो जाएगा तो उसमें भक्ति लता बीज बहुत तेजी से बढ़ेगी आगे. But it takes everything you've got to become Krishna conscious. लेकिन इसमें जो भी हम कृष्ण भावना में करें इसमें समय लगेगा. Just like if you're a businessman, many persons in Gujarat, they're famous as businessmen. A Gujarati can go anywhere in the world, even the North Pole, and make money. गुजरात में लोग बड़े-बड़े व्यापारी हैं, बड़े-बड़े उद्योगपति हैं और वो पैसा कमाने के लिए बड़े विख्यात हैं. वो दुनिया के कोई भी हिस्से में, यहाँ तक भी वो उत्तरी पोल में भी चले जाएंगे तो वहाँ जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ भी पैसा कमा लेंगे. But to the same degree that you want to make money in this country, in this region here in Surat, with the same determination, you have to try to become Krishna conscious. You can't hold back even a little bit. तो जिस दृढ़ता से हम पैसा कमाना चाहते हैं उसी दृढ़ता से हम कृष्ण भावनामृत में भी प्रगति कर सकते हैं. It's called Atmanivedanam. It means fully surrendered. तो इस प्रक्रिया को आत्मनिवेदन बोलते हैं. पूर्ण रूप से हम भगवान को शरणागति कर लें. And in order to inspire us how to give up everything and just depend on Krishna, there's a beautiful story. तो ये भगवान के लिए हम सब कुछ दे दें उसके बारे में बहुत सुंदर कथा है. Just to give up everything and just depend on Krishna. Krishna, help me, I want to be your devotee. तो कृष्ण सब कुछ देके कृष्ण में पूर्ण रूप से आश्रित रहना और कृष्ण को कहना कि कृष्ण मुझे मदद करो, मैं आपका भक्त बनना चाहता हूँ. Once Draupadi came to Lord Krishna, it was just after her painful experience of having been lost in the gambling match and humiliated by the attempt of Dushashan to strip her naked in a public assembly. She came to see Krishna afterwards. तो एक बार ऐसा हुआ कि द्रौपदी भगवान कृष्ण से मिलने आई और ये उस टाइम हुआ जब ये
असत सभा का काम, लज्जा हरण का काम पूरा हो गया था, युद्ध पूरा हो चुका था, उसके बाद एक बार द्रौपदी भगवान कृष्ण से मिलने के लिए आई। She said to Krishna, Krishna, why did it take you so long to save me? तो कृष्ण को द्रौपदी ने कहा कि उस सभा में जहाँ मेरा लज्जा हरण हो रहा था, तो आपने इतना समय क्यों लगाया मुझे बचाने में? You all know it's in your DNA. You know how Draupadi was saved. Krishna eventually incarnated as her sari, so she couldn't be stripped naked in the front of so many men. तो आप सबको जानते हैं कि कैसे द्रौपदी की रक्षा भगवान ने करी। भगवान साड़ी के रूप में अवतरित हुए और साड़ी के रूप में द्रौपदी को उन्होंने ढक लिया। But it took some time for Krishna to appear as the sari. लेकिन कृष्ण साड़ी के रूप में प्रकट हुए, उसमें कुछ समय लगा, तुरंत नहीं आए वो। Krishna, why did you take so long to save me? तो कृष्ण आपने क्यों इतना टाइम लगाया मुझे बचाने में? You could have in the very beginning become the sari and saved me. आप तुरंत भी तो आ सकते थे, बिल्कुल शुरुआत में भी तो आ सकते थे और मुझे बचा सकते थे। So Krishna said, listen carefully, Draupadi. भगवान कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी ध्यान से सुनो। At first you called out my name, O Krishna. सबसे पहले तुमने मेरे नाम को पुकारा, हे कृष्णा। O Krishna. हे कृष्णा। Not, oh Krishna! तुमने ऐसा नहीं बोला, हे कृष्णा। Like sometimes we chant, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna. तो जैसे हम कभी-कभी जप करते हैं, जप के साथ-साथ हम दूसरे काम करते हैं, हरे कृष्णा, यहाँ देखते हैं, घड़ी में देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, ढंग से जप नहीं करते हैं। If I call you, you know, I say, oh, Mr. Sharma, come here. You know, if I say, Mr. Sharma, come here, how will you come? If I say, Mr. Sharma, come here, no, you're not going to come. Mr. Sharma, please come. So if you chant, oh, Hare Krishna, Krishna, no, Ram, 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 Ram. Wow, Ram, Ram. Krishna, come, Hare Ram. I'm going to come. तो जैसे महाराज कह रहे हैं कि हम किसी को बुलाएंगे, शर्मा जी यहाँ आइए, तो शर्मा जी नहीं आएंगे। आप बोलेंगे शर्मा जी यहाँ आओ, तो शर्मा जी आएंगे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare. So Draupadi, you said my name, but then you took shelter of Arjun and Bhim. तो हे द्रौपदी, तुमने मेरा नाम तो लिया था, लेकिन साथ-साथ में तुमने अर्जुन और भीम से भी सहायता मांगी थी। You said, Arjun and Bhim, can't you see what is happening to your wife? They are violating my chastity right before your eyes. Arjun, Bhim, do something. हे अर्जुन भीम, तुम क्या नहीं देख रहे हो कि ये मेरी पवित्रता को भंग कर रहे हैं इस सभा में? तुम ये नहीं जान सकते, तुम मेरी मदद नहीं कर सकते? So Krishna said to Draupadi, so I thought at that time I wasn't really needed because you weren't calling me, you were calling Arjun and Bhim. तो कृष्ण ने द्रौपदी को कहा कि उस टाइम द्रौपदी, मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ मेरी आवश्यकता तुम्हें नहीं है, क्योंकि तुम तो अर्जुन और भीम को पुकार रही थी। Then Draupadi said, okay, but after that you should have come. द्रौपदी ने कहा ठीक है, लेकिन उसके बाद तो आप आ सकते थे ना? Krishna said, but after that you took shelter of Drona, the teacher of the Kauravas and Pandavas. लेकिन कृष्ण बोले कि उसके बाद तुमने द्रोण की शरण ली, द्रोणाचार्य की, जो कौरव और पांडवों के शिक्षक थे। You said, Drona, you're a Brahmana. How can you tolerate this? आपने ये बोला है द्रौपदी की, द्रोणाचार्य आप ब्राह्मण हो, आप कैसे ये गलत काम सहन कर सकते हो? Draupadi, again, you weren't calling me, so I thought I wasn't needed. तो हे द्रौपदी, तुम उस टाइम भी मुझे नहीं बुला रही थी, इसलिए मुझे लगा मेरी आवश्यकता नहीं है। After that, you took shelter of Bhishma, the powerful warrior and most respected grandfather. और उसके बाद द्रोणाचार्य के बाद तुमने भीष्म का आश्रय लिया, जो भीष्म बहुत बड़े योद्धा थे और बड़े पितामह थे। He wouldn't help, so then you went to Dhritarashtra, and then you went to all the kings. और भीष्म के बाद आप धृतराष्ट्र के पास गई, और उसके बाद सब बड़े-बड़े राजाओं के पास गई। So I thought I wasn't needed because you were asking the help of all these personalities. और इसलिए मेरी जरूरत तुम्हें थी नहीं, क्योंकि तुम उन सब से मदद मांग रही थी। And then finally you tried to protect yourself by holding your sari with two hands. और आखिरकार जब इन्होंने तुम्हारी मदद नहीं करी, तो तुमने अपने आप की रक्षा करने के लिए अपनी साड़ी को दोनों हाथों से पकड़ी। So I was thinking, Draupadi thinks she's very strong. She thinks she can fight Dushashan. Maybe I should go.
तो मुझे लगा, कृष्ण बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लगा कि द्रौपदी को मेरी आवश्यकता नहीं है, वो खुद बलवान है, वो दुशासन से लड़ सकती है, वो अपनी रक्षा खुद कर सकती है. Then you let go of your sari, you held up one of your hands and called out to me. लेकिन फिर तुमने एक हाथ से अपनी साड़ी को छोड़ दिया और एक हाथ ऊंचा करके मुझे पुकारा. So I thought, Draupadi, you're calling me, but you're still holding on to a part of your sari with your own hand, believing in your own strength. तो मुझे ऐसा लगा कि द्रौपदी तुम मुझे बुला तो रही हो, लेकिन अभी भी तुमने एक हाथ से अपनी साड़ी को पकड़ा हुआ है. इसका मतलब ये है कि तुम अभी भी अपनी शक्ति पे विश्वास करती हो. Only when you raise both of your hands, you let go of your sari, you raised both hands and called out to me, "Hey Krishna! Hey Govinda!" did I come. लेकिन जब सबसे आखिर में तुमने दोनों हाथ से साड़ी छोड़ दी और तुम जोर से चिल्लाए, हे कृष्णा, हे गोविंद, तब मैं आया. Why did I come? मैं क्यों आया? Because I knew you only wanted me. और उस टाइम में इसलिए आया क्योंकि मुझे तब पता चला कि तुम्हें खाली मेरी ही आवश्यकता है, इसलिए मैं आया. Atmanivedanam, Krishna, 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 hey! Because I knew you only wanted me, you only depended on me, so as you gave your full self to me, I gave my full self to you in the form of that sari. तो ये आत्मनिवेदन की भावना है. जब तुमने पूर्ण रूप से मुझे दे दिया, तो मैंने भी तुम्हें पूर्ण रूप से ये साड़ी के रूप में दे दिया. It's very interesting. We hear of the Das avatars, Matsya, Kurma, Nrsimha. Here's another incarnation not mentioned in the Srimad Bhagavatam. Krishna comes in the Sari incarnation. तो श्रीमद् भागवतम में हम दशावतार के बारे में पढ़ते हैं, मत्स्य, कूर्म, वराह, लेकिन हमने साड़ी के अवतार के बारे में नहीं पढ़ा है. लेकिन साड़ी के अवतार में भी भगवान आते हैं. He's the supreme mystic. भगवान परम योगी हैं. And all of them, as they surrender unto me, I reward them accordingly, Krishna और says. भगवान कहते हैं, जो जिस प्रकार से मेरी शरणागति आता है, मैं उस हिसाब से उनसे आदान प्रदान करता हूँ. So if you only want Krishna 50%, just surrender 50%. तो अगर आपको कृष्ण 50% चाहिए तो आप 50% शरणागति करिए. If you only give 75%, you'll only get 75% Krishna. अगर आप भगवान के लिए 75% शरणागत होंगे तो आपको 75% कृष्ण देंगे. But if you give everything to Krishna, your full self, Krishna will give his very self to you. And that's perfection of life. लेकिन अगर आप कृष्ण को अपना संपूर्ण सब कुछ दे देंगे तो कृष्ण भी अपना संपूर्ण आपको दे देंगे और यही जीवन की परम सिद्धि है. So we have to be like Draupadi. We have to give everything up and just call out to Krishna to please deliver us from this dukkhalayam ashashvatam, this temporary material existence. तो हमें भी द्रौपदी की तरह दोनों हाथ उठा के भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, मुझे इस भौतिक दुखमय संसार से निकाल दीजिए. So raise your hands and repeat after me. तो सब हाथ उठा के मेरे पीछे बोले, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Gopimanande, Jai Jai Sri Radhe, Jai Jai Sri Radhe, Jai Jai Sri Radhe, Sham. Hare Krishna, thank you.